देश एक तरफ से हम देश को स्टेट को प्रमोट कर रहे हैं एंड दूसरे हिसाब से टूरिस्ट को जो गोवा आ रहा है वी आर लुकिंग एट हाउ द बेस्ट ऑफ द वेडिंग्स कैन हैपन इन गोवा. द वेडिंग्स अब्रॉड हैव स्टॉप्ड, most of them majorly stopped with our prime minister's shout out. Now we have to see how we can benefit. Conferences में सिर्फ conference नहीं होता है. There are a lot of team things happening around the place. There cannot be a better place than Goa. So Goa as a curator, as a model, we are trying to showcase as everything for a tourist to stay not only for the number of days but increase his stay with the type of offerings that we have, and that is being done by the trade which are present here. से बैकअप चाहिए, वो बैकअप के देने के लिए विकसित भारत एक तरफ से हमारे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं तो हम विकसित गोवा बात कर रहे हैं. तो महिला को बढ़ावा कैसे दें, इंक्लूसिव टूरिज्म कैसे करें, लास्ट माइल तक टूरिज्म का बेनिफिट्स कैसे पहुँचे, ये पूरा प्लान 2022 से जब टूरिज्म डिपार्टमेंट और IT डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी अलॉन्ग विद आवर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, वी स्टार्टेड एंश्योरिंग और ओवरऑल चेंज इन प्लान. तो गोवा बियॉन्ड बीचेस आ गए, festivities, heritage, tradition, culture, everything started getting promoted, and importantly we started looking at the spiritual and other aspects which were never looked at before. Goa में luxury resorts, different types of hotel properties, gated complexes, OTA partner जैसे Airbnb, Make My Trip सब हैं. तो it gives the option for a tourist to decide where he wants to stay, how he wants to stay. And Gujarat is a very important market for weddings, इम्पॉर्टेंट मार्केट फॉर माइस. तो सेलिब्रेशन गुजरात का शादी का जो होता है वो माहौल ही अलग है. लेकिन बीच के साथ में बाकी का गोवा भी देख लो, मानसून का गोवा देख लो, फेस्टिविटीज़ देख लो, ट्रेडिशन देख लो, कल्चर एक्सपीरियंस करो, गांव देख लो, अपना रूरल टूरिज्म देख लो, वाटरफॉल्स देख लो और स्पिरिचुअल टूरिज्म देख लो. सो हमारे स्प्रेड थोड़ा वी आर ट्राइंग टू एंश्योर दैट इफ अ डोमेस्टिक टूरिज्म गुजरात का टूरिस्ट 3 नाइट्स या 4 नाइट्स के लिए आ जाता है तो हम बोलते हैं एक दिन बढ़ाओ आपका, और हम जो बोल रहे हैं वो देख लो तो यू आर एबल टू एक्सपीरियंस ए बेटर पार्ट ऑफ गोवा. पैटेंट में आप 3 रात को आप बीच पे ही आ रहे हैं, 4थी रात आप गाँव में जाओ तो गांव का अपना हमारा गोवा देखो. फिर 90 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ, 2 घंटे में आप नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा एंड टू एंड पहुँचोगे तो आप गोवा आराम से देख सकते हो. ऐसा नहीं है कि हमको 500 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर 200 150 किलोमीटर में पूरा हम गोवा देख सकते हैं. तो इसीलिए वी आर एंश्योरिंग दैट वॉट एवर वी आर एबल टू प्रमोट is spread across the places, from adventure to spiritual to sports to culinary to wellness to adventure. तो ये पूरे स्प्रेड में एक जगह पे ओवर टूरिज्म नहीं होता है. एंड गांव के जो इश्यूज हैं हम ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं है क्योंकि हमारे गांव वैसे ही होने हैं. इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन द ethos and culture and the people and the tourists who would want to come and visit. In terms of tourism footfalls, last year we had roughly about 6,587,000 to be precise tourists coming from various parts of Gujarat to Goa. So coming here first and foremost is thanking the people of Gujarat for having made Goa as a destination for them to come across and celebrate. Gujarat is a very important market in terms of families, in terms of friends, in terms of solo travelers, and importantly Gujarat celebrates weddings like no other people. Gujarat has conferences which are quite big in size. So with our Honorable Prime Minister, his whole home state is Gujarat, and he has told the whole country how important tourism is for every particular state. Goa has been a destination, and for us to understand how we can connect to Gujarat with his whole thought of Vikasit Bharat 2047, he has been talking about the 5 T's: trade, technology, tourism, talent and tradition. But when we look at Goa and Gujarat, tradition and tourism connect. Goa and Gujarat, which one side Goa is known only for the sun, sand and sea, and the image of Goa is party life. We are here today to present ourselves in a manner which people of Gujarat may need to know through our travel partners. Goa has one of the only Devi Krishna temple in the country, which is Devki Ma, and on her lap is Lord Krishna sitting. Gujarat is known as the Karma Bhumi of Lord Krishna. So when we look at connecting this today, we can definitely connect from a cultural bonding also, additionally to the spiritual tourism that we have been talking about. This temple in Goa was desecrated by the Portuguese about 600 years back, and
that time the villagers had saved this idol and later taken it to another village, and that is where the temple came in North Goa in a village called as Marcel. So we are today talking about Ekadasha Tirtha, which we have launched. It's a story about 11 temples, which is having history linked to our tradition and legacy of 100 years to 1000 years. Right. We have the story of Chhatrapati Shivaji Maharaj, where people feel he is only linked to Maharashtra. That because of him, desecration of temples and fight against the Portuguese was possible. That's right. And he was also responsible to ensure that the Saptakoteshwar temple in Narve, which is in a part of North Goa, was again beautified and reconstructed by Chhatrapati himself. So the story goes of these 11 temples. Additionally, today, over the years, we have been, after COVID, understanding the requirements of the tourist, whether especially from Gujarat, whether he is a solo traveler, young traveler, women traveler, families, friends, their requirement other than the suns and sea that we are promoting only. But we started with Goa Beyond Beaches. Today, even in monsoons, we are promoting trails, which is a part of promoting the villages. When we are talking about the hinterlands, we are promoting wellness. हम culinary भी promote कर रहे हैं, adventure भी promote कर रहे हैं. तो ये हिसाब से from yoga to Ayurveda to other, we have already started promoting ourselves in that. Gujarat itself, and there let us promote film industry also. हम गुजरात से हमेशा हमारे भाई ही हैं, तो गुजरात की मार्केट बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. इसलिए जो अभी हम लोगों ने पूरा आपको जो बोला है, that is getting connected to the people of Gujarat. Okay. So as I started my conversation, here I have come only to thank the people of Gujarat Oh yeah. for the support and the number of people who have been coming to the place. Yes. And as far as this TTF goes, it is part of facilitating our business partners who are our B2B business के लिए, वो जो भी वर्टिकल्स नए ओपन हुए हैं वो ऑफरिंग्स गुजरात को देने के लिए. सो एज वॉट एवर वी कैन, हर्ष भाई से भी बात हुआ था सुबह को, हाउ वी कैन गेट इन टू MOU where we can have an exchange of culture Right. and spiritual, which can be a part of a further program. The only challenge right now is the connectivity issue. हम लोग रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज से अच्छे कनेक्ट हैं. Ahmedabad Goa sector is there, Right. but there were flights from Gujarat, Rajkot, Surat, Rajkot and Vadodara. ये तीन फ्लाइट जो कंट्रीज आ रहे थे वो बंद हो गए. तो सेक्टर्स ट्रेवल करने के लिए और हमारे प्रधानमंत्री का देखो अपना देश Right. 100% लागू करने के लिए और टू मेक इट वर्क, वी नीड दिस कनेक्टिविटी हैपन. वी नो दैट द कंट्री इज गोइंग थ्रू शॉर्टेज ऑफ फ्लाइट्स, बट टूरिज्म डेस्टिनेशन स्टेट्स एंड जो इकोनॉमी के हिसाब से टूरिज्म पे डिपेंडेंट हो, वहाँ सिविल एविएशन एंड कंट्री हैज टू लुक एट इंक्रीजिंग द ट्रेवल इन मिनिमम टाइम. एक टाइम था Ah. जो हम दरिया से कनेक्ट करते थे. Right. गुजरात पोर्ट वाज कनेक्टेड टू द कोंकण कोस्ट. Yeah. आज फ्लाइट से 90 मिनट्स में पहुंचते हैं. So when we are reaching in 90 minutes, why not utilize The and time. ensure that you have great time? हाँ. शादी आज ये जो आप कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, it is not only a celebration of two people, Right. it is celebration of many people coming together. Okay. So as the wedding happens, the tourists have opportunity to see the state also. That's true.